हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन शिक्षा पर। जैसा कि मैंने अपने चैनल की इंट्रो वाली वीडियो में बताया था कि मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसका नाम होगा टॉप 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, और जिसमें हम हर एक चैप्टर के अराउंड 100 या 200 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए मेनली इम्पॉर्टेंट हैं। और आज हम पहले चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट के अराउंड 30 या 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम अलोन? ऑप्शंस आर एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड एफपीएस यूनिट, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एसआई यूनिट। इन क्वेश्चन, mass is the measure of, options are matter contained, weight, force, none of these, and correct answer is option A, matter contained. Third question, among the following the derived quantities, options are mass, length, time, density. Right answer is option C, density. Question number 4, which one of the following is not a fundamental unit? Option A, Newton, B, kilogram, C, meter, D, second, and right answer is option A, Newton. In SI unit, the number of basic physical quantities are, options are 3, 7, 9 and 21, and right answer is option B, 7. Question number 6, light air is, and the right answer is option C, the distance traveled by light in free space in 1 year. Question number 7, 1 micron equals to, right answer is option C, 10 is to power minus 6 meter. Question number 8, practical unit of heat is, right answer is option A, calorie. क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद ही देख लें, मैच द लिस्ट है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी है, 11th का ए है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द लेंथ्स ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इंक्रीज? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।